हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। मोर देन 10% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड को इफेक्ट किया हुआ है, एंड दैट इज माइग्रेन। अ माइग्रेन इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेक दैट ऑफन कम्स विद वॉमिटिंग, nausea and sensitivity to light. It can last for hours or days. Migraine के symptoms are different in everyone. For some people they occur in stages, and ये stages होती हैं. First is prodrome. This stage happens hours or days before a headache. More than 60% of people with migraine often have symptoms like being sensitive to light, sound or smell, fatigue, food cravings or lack of appetite, mood changes, severe thirst, bloating, constipation or diarrhea. Next stage is aura. These symptoms stem from your nervous system and often involves your vision. They usually start gradually over 5 to 20 minutes of a period and last for less than an hour. इसमें you may see black dots, wavy lines, flashes of light or hallucinations. You may also have tunnel vision, not able to see at all, having tingling or numbness on one side of the body, not able to speak clearly, have heavy feeling on your arms or legs, have ringing in your ears, or notice changes in smell, taste or touch. And the last stage is migraine attack. A migraine headache often begins as a dull ache and grows into a throbbing pain. It usually get worse during physical activity. Migraine pain जो है वो move कर सकता है from one side of your head to other side. It can also affect front of your head or can feel like affecting your entire head. About 80% लोगों को headache के साथ nausea और vomiting भी होती है. You may also be pale or feel fainted. Most migraine headaches can last up to 4 hours, but severe ones can go for more than 3 days. It is very common to get 2 to 4 headaches per month. The last stage of migraine is postdrome. This stage can last up to for a day after the headache. And इसके symptoms होते हैं feeling tired, cranky or feeling unusually refreshed or happy, muscle pain or weakness, और फूड क्रेविंग्स और लॉस ऑफ एपिटाइट. डॉक्टर्स के पास माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है, but it is seen to be related to changes in your brain or to your genes. For many years, scientists thought that migraine is caused due to changes in blood flow in the brain. Current thinking is that migraine usually starts because of overactive nerve cells that sends out signal that triggers trigeminal nerve, which gives sensation to your head and face. Migraines के कई risk factors होते हैं. That are, women have migraines 3 times more commonly than men. ज़्यादातर 10 साल से 40 साल के लोगों में माइग्रेन्स स्टार्ट होते हैं. 5 में से 4 लोगों को माइग्रेन उनके फैमिली जीन से मिलता है. और कई रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी. माइग्रेन के कॉमन ट्रिगर्स हैं हार्मोन चेंजेस जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन में, ओव्यूलेटिंग वुमेन में, या यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स. स्ट्रेस इज ऑल्सो अ ट्रिगर ऑफ माइग्रेन. कुछ फूड्स एंड ड्रिंक्स लाइक चीज, अल्कोहल एंड फूड एडिटिव्स भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं. स्किपिंग मील्स, कैफीन, changes in weather, loud noises, bright lights and strong smells can also trigger migraine. Medications जैसे vasodilators भी migraine cause कर सकते हैं. Tobacco and also अगर आप बहुत ज़्यादा sleep ले रहे हैं या कम ले रहे हैं वो भी migraine trigger कर सकते हैं. Migraine के कई types होते हैं. First is menstrual migraine that is linked with women's period. Second is silent migraine. इसके अंदर aura symptoms आते हैं but headache नहीं होता. Vestibular migraine, इसके अंदर balance problems हो सकती हैं, vertigo, nausea and vomiting भी हो सकता है. Abdominal migraine, इसके अंदर there is stomach pain, nausea and vomiting. Hemiplegic migraine, you may have short-term paralysis or weakness in one side of the body. Ophthalmic migraine that affects our eye and vision. Status migrainosus, that is the most severe type of migraine. It can last up to more than 72 hours and pain and vomiting इतनी ज़्यादा intense होती है कि you may have to be hospitalized for that. Migraine की frequency 3 levels में divide की गई है. First is episodic migraine. You get migraine now and then. Then is
high frequency episodic migraine. That means you get 8 to 14 headaches per month. Then last is chronic migraine. That means आपको headache more than 15 days of the month है. There is no cure for migraine yet, but yes, कुछ medications can help reduce or stop the migraine or keep your symptoms from getting worse. You can also avoid things that trigger your migraine and make some lifestyle changes. Some treatments of migraine include pain relief medicines, nausea medicines, triptans. These drugs help balance chemicals in your brain, and there are some preventive medicines also like seizure medicine, blood pressure medicine, CGRP antagonist medications can help prevent migraine. कुछ होम रेमेडीज हैं जो माइग्रेन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे रेस्टिंग विद क्लोज्ड आईज इन डार्क एंड क्वाइट रूम, पुटिंग अ कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक ऑन योर फोरहेड एंड ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स. कुछ डिवाइसेस हैं जो माइग्रेन को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे सिफाली. इट्स अ हेडबैंड लाइक अ गैजेट दैट सेंड्स इलेक्ट्रिक पल्सेस थ्रू द स्किन ऑफ योर फोरहेड. गामा कोर that sends mild electrical signals to the fibers of vagus nerve in your neck, help in relieving pain or prevent the migraines. So friends, if you like this video and like to see more of informative videos, please subscribe to the channel and share it.